हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मास्टर मैकेनिकल चैनल। तो आज हमारे पास आया एच डिलक्स बाइक। आप देख सकते हैं इसका वायरिंग कट चुका है। तो काफ़ी जगह से इसका वायरिंग कटा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ से भी कटा हुआ वायरिंग है, आप देख सकते हैं। तो ये वायरिंग पूरा कटा हुआ है, तो हम इसको नया वायरिंग फिटिंग करेंगे। चलिए मैं आपको वायरिंग ला के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मिंडा कंपनी का वायरिंग है, और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर हीरो एच डिलक्स लिखा हुआ है, और इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ है। चलिए हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे। इससे पहले यहाँ पर हम प्राइस दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर इसका प्राइस लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। चलिए हम इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर इस तरीके से फिटिंग किया जाता है, इसको खोल लेते हैं हम। तो इस प्रकार से फिटिंग किया जाता है। इसके ऊपर रबर लगी है, इसको निकाल लेते हैं, पूरा वायरिंग को दिखाते हैं। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो इस रबर को हम यहाँ से खोल लेते हैं, देख सकते हैं पूरा वायरिंग है यहाँ पर, और यहाँ पर इसका पार्ट नंबर भी लिखा हुआ है। तो इसको हम फिटिंग करेंगे इस बाइक में। देख सकते हैं यहाँ पर इसका पार्ट नंबर है। तो ये पूरा वायरिंग है, देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए हम इसको फिटिंग कर लेते हैं। Somewhere in between what we went has been, it's a constant fight, oh my. But I'm not falling, even if I'm caught in the middle. No, I'm not falling.
lost in the middle of time. But I'm not falling, even if I'm rooted in the middle. No, I'm not falling. But when did I get lost in the middle of time? पर मैंने सारा वायरिंग फिटिंग कर दिया है। अब देख सकते हैं स्पीडोमीटर मैंने नया डाला हुआ है। चलिए इसको ऑन ऑफ करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर न्यूटन लाइट जल रहा है। तो यहाँ पर मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ तो ये जल रहा है। तो चलिए पूरा वायरिंग को मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से पूरा वायरिंग को मैं दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर तो ये हमारा एसटी कॉइल का तार है। यहाँ पर हॉर्न का तार फिटिंग किया हुआ है। ये हमारा सेंसर का तार यहाँ पर फिटिंग किया है। ये हमारा पेट्रोल गेज का तार है। यहाँ पर CDI फिटिंग किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं चार्जर फिटिंग किया है। और यहाँ पर साइड लाइट की पिन है जो कि बाद में फिटिंग करेंगे।